Good afternoon. I'm Aniket. I welcome you all to today's lecture. We started our polity preparation with the last 3-4 lectures. We started with constitutional history of our India. Then we moved to the federalism. Then we discussed the constitutional amendment. Then we discussed the parliamentary structure of our Indian nation. आवाज आ रही है मेरी? Okay. History of our India. Okay. So I welcome you all to today's lecture. In this lecture we will discuss the parliamentary committees. Parliament है, parliament से जो parliamentary committees बनती है, we will start to discuss that. Okay, so that will help you to crack the UPSC preparation. जो civil का pre का जो contextual syllabus होता है, logic based syllabus, and again you have to answer that. You have to write the answers in the mains also. Okay, तो आपका basic understanding, conceptual understanding हो गया. So that will help you to understand the questions which UPSC is asking in very logical way. Prelims पे भी बहुत से logical based questions आ रहे हैं, as well as mains पे भी applied based questions आ रहे हैं. So that will help you to crack the MCQ related questions also, and that will help you to write the answers within the 150 words में जो आंसर लिखना है आपको मेंस में, उसको भी आपको मदद मिल जाएगी. So we will start today's lecture with the crack UPSC CSE exam platform with Unacademy. Okay, Unacademy is one of the largest learning platform on India. Online platform है that will help you to prepare in the civil services at the very stages, that is the prelims, mains और interview के different stages जो है वहाँ पे आपको help करेगा ये platform for your preparation. So there are number of courses, that is the daily live courses are going on, then live test series is there, then quizzes are going on, then the structured courses are there, that is totally based upon the definitive specific related जो structured courses है, जैसे कि polity related हो गए, answer writing related हो गए, then that will came into the essay writing, ethics के answers कैसे लिखने हैं, तो that will help you to guide your preparation. Okay, so Unacademy is providing unlimited access to the knowledge base. It is also launched their Unacademy learning app, so you can download that app and start your preparation. So first of all, I will introduce myself. I am Aniket. I given 5 months of UPSC civil services, appeared in the 2 interviews also. I have a post graduation in the biotechnology. I have 2 years of DPT JRF fellowship for my postgraduate studies and more than 3 years of experience to guide the civil service aspirant, whether it is in Pune or in the Delhi. So if you have any doubt regarding your preparation, regarding my topics also, my lectures, so you can just contact me with joining my Telegram channel, that is the UPSC Aniket. Okay, there are number of top educators are there on the Unacademy, so you can get your subscription for joining the more than 16,000 courses. जैसे कि पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, then optional courses are going on, then environmental related, art and culture के है, पॉलिटी के है, answer writing specific structured courses है. So you can get your subscription on the monthly basis also. Month पे भी आप subscription ले सकते हो, as well as you can go for the 1 year of subscription. तो उसके हिसाब से आपको discount मिल जाएगा. Right. So there are plus courses are going on, जैसे कि एक और आइकॉनिक कोर्सेज. प्लस कोर्सेज में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर रिलेटेड सिलेबस मिल जाएगा, और आइकॉनिक कोर्सेज जो है सो दैट विल हेल्प यू इन द पर्सनलाइज, जैसे कि मेंटर एलोकेशन हो जाएगा, उस पर आपको गाइडेंस मिल जाएगा. सो बेसिकली इफ यू वांट टू जॉइन द प्लस कोर्सेज और आइदर आइकॉनिक कोर्सेज और प्लस कोर्सेज, यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज द अनिकेत, दैट विल हेल्प यू टू 10% ऑफ डिस्काउंट. 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इफ यू यूज द कोड अनिकेत. ओके, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना. तो विल स्टार्ट today's lecture, right? Okay, good morning, good afternoon to all. So first of all, we have seen the parliament. We have a parliamentary form of government. Okay, तो कमिटी के हिसाब, कमिटी के लिए बढ़ने से पहले we will describe the basic aspects of the parliament और parliamentary committee कहाँ से start हुई है. So we have gone for the parliament, that is the representative government. Okay,
जो representative, we will elect the representative, that is the member of parliament, who indirectly will make the law. So what is the function? This is the parliamentary form of government. तो parliament function क्या है? That is the to make the laws, okay, and to enforce the accountability on the executive. This is the important function of parliament, right? So obviously, as we have seen, the parliament is made up of, जैसे कि लोकसभा में, as we have all know that more than 550 members are there, and in Rajya Sabha we have a 250 members. So that became so very large to do these functions, right? ये functions के लिए ये बहुत large हो जाएगी body, that is the parliament. So to relieve the pressure on the parliament and make its functioning very simple, very specific and simple, what is required is the limited numbers, and that will be provided by the committees. So the committees, which are made from parliamentary members and which assist the parliament in enforcing its function, that is the making of law and enforcing the accountability on the executive, इस function में जो committees help करते हैं, which is made from the parliament, that's called the parliamentary committees. Parliamentary committees. So either we, कोई अगर डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे, राइट? ओके, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज कैसे बनती है ये हमने देखा. तो व्हाट आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी? कोई हिस्ट्री होगी उसके पीछे, राइट? वी हैव गॉन फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू द historical nature of our nation, that in pre-independence era, like in the Act of 1935, we can say that the evaluation of parliamentary system in Indian government, evolutionary parliamentary system. So we have a history of our parliament which is related with the British parliamentary system. Okay, the British parliamentary system has evolved and British has replicated their experience in our nation, that is the India. So logically we have gone for, due to this experience, we have gone for the parliamentary form of government. So obviously the committee system, the parliamentary committee system की अगर हम history देखें तो that will also goes to the British parliamentary committees. Okay, so this is most important thing. Again, if we compare the other governments, that is the USA has a very strict and efficient parliamentary system, parliamentary committee systems, right? जो कांग्रेस कमिटीज है यूएस में और जो सेनेट कमिटीज है यूएस में, so that is considered as a very efficient if you compare the parliamentary system. As we all know, in USA presidential system is there, but the parliament has a more effective function through the committees. So US committee system is very much evolved and very much matured if we compare with the USA's parliamentary system with the Indian parliamentary system, committee system. Okay, so this is most important. So committee system has started to evolve in India in 1920s. As we all know, in 1990s, Montagu-Chelmsford Act, it provided the committee system. So in 1921 only, we can say the crude formation of our committee system in the Public Account Committee.
अकाउंट कमिटी जो है it started in the 1921 only. Again, the estimate committee is also started in the 1921. So as we can say that our parliamentary committee history started with the British parliamentary committees, and then it started evolving from the 1919 Act, and then the crude nature of our parliamentary committee system started. जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, देन एस्टिमेट कमेटी हो गई, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई इन 1920s में. So this is most important thing. So what are the functions of committee? What is the function of committees? If you see the committee system, so as we have seen, the committee assist the parliament to perform its functions efficiently. पार्लियामेंट को असिस्ट करती है, उसके जो फंक्शंस हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? दैट इज द मेकिंग ऑफ लॉ एंड एनफोर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑन द एग्जीक्यूटिव. सो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उसको इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए कमिटी पार्लियामेंट को हेल्प करेगी. एज वी ऑल नो, जैसे कि बहुत ब्रॉड है पार्लियामेंट, more than 500 members are there. Again, राज्यसभा में भी more than 250 members are there. तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था. तो उसके बहुत इफिशिएंट बनाने के लिए पार्लियामेंट से कुछ मेंबर्स आप लोगे, और that forms the committee, and that committee will help you the overall parliamentary function. जैसे कि जो कोई लॉ पास करना हो या बिल पास करना हो, या जैसे कि ये फाइनेंस के जो बिल्स है या बजट है, ओके, या कोई बिल्स है, तो ऑब्वियसली जो आप अगर 550 मेंबर्स के सामने वो जो बिल्स लाएंगे, तो उसको क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करना बहुत ही लेंदी प्रोसीजर हो जाती है, राइट? बट इफ यू मेक द कमिटी ऑफ 2 and 20 members, 10 और 20 members की कमिटी अगर आप बना दो, तो उसके सामने वो बिल को एक्सप्लेन करने में बहुत इफिशिएंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, एंड दैट विल मेक यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल वेरी इफिशिएंटली. देन अगेन पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ जो पार्टीज है उनके मेंबर्स वहां पे अवेलेबल होंगे, तो उनके सामने वो बिल को एक्सप्लेन करने में आपको इजीनेस हो जाएगा. That will increase the efficiency of our parliament, right? So we have seen the history of our parliamentary committee and how the parliamentary committees are originate, कैसे origin हुआ parliamentary committees का, और कैसे वो parliament को assist करती है, right? So this is the basic background. If you have any doubt, you can ask me. Okay, then we will move to the first slide of our lecture, that is the parliamentary committees. The feature of our parliamentary committees, the features. Okay, so some parliamentary committees has been mentioned within the constitution, like public account committee को mention किया गया है, then estimate committee को mention किया गया है. Okay, but from which article parliamentary committees drive their powers? Okay, कौन से parliamentary articles से parliamentary committees बनाई जाती है? तो if you see the parliament article 105, article 105 what states, it gives the privileges to the members. जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है उनके प्रिविलेजेस को मेंशन किया गया. इट मेंशंस द प्रिविलेजेस गिवन टू द पार्लियामेंट्री मेंबर्स, आर्टिकल 105. तो एक प्रिविलेज बनता है पार्लियामेंट्री मेंबर्स का टू सर्व इन द कमिटी, टू गेट इन्फॉर्म for the bills, right, for the representation of peoples. Okay, तो वो जो privilege है इंफॉर्मेशन का और वोटिंग का, उसको यूज करके पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई गई, राइट? ये इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान में रखना है. अगेन केम द आर्टिकल 118. Article 118. What Article 118
tells that the parliament has its own power to make rules and conduct its business. So this is most important articles which gives the powers to the parliamentary committees. Parliamentary committees कहाँ से अपना power derive करती है? तो you can say that the article 105 and article 118 which gives the parliament power to conduct its own business and make its own rule for the efficient conduction of its business. Okay, तो उसके हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई है to make parliamentary functions more efficient. Right, so this is most important thing what we have seen the history and the कौन से constitutional articles से derive होती है parliament की power, okay, committees की power. Right, so what is the procedure of appointment? Appointment की procedure कैसे होती है? तो as general, as we have all know that parliamentary committees are made up of a member of parliament. Okay, as we have seen the some committees are selected, मतलब वो nominations के बेस पे बनाई जाती है. We will discuss that particular committees and some committee जैसे कि rule committee हो गई, rules committee, then general purpose committee हो गई. जो administrative की committees हैं, the administrative committees are mostly nominated by speaker. और जैसे कि जो speaker है और राज्यसभा के जो चेयरमैन है, RS चेयरमैन, that will nominate on that particular committee. So appointment again, and some committees are elected committees. Okay, कुछ committees है जैसे कि public account committee हो गई, then estimate committee हो गई. So these committees are elected committees, elected by the पार्टी. जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उसमें से बनाई जाती है कमिटी. जो आइदर इट गेट द प्रोपोर्शनेट टू द पार्टी, मतलब जितने पार्टी के मेंबर्स होंगे दैट पर्टिकुलर पार्टी, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिल जाए. तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम पे यहाँ पे इलेक्शन होता है. सो दिस इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ पर्टिकुलर कमिटीज. पार्लियामेंट्री कमिटीज के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर यहाँ से होती है स्टार्ट. ओके, आइदर इट इज अ नॉमिनेटेड कमिटी जैसे कि सिलेक्शन होता है, और आइदर इट इज अ इलेक्टेड कमिटी. राइट, ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे. ओके, देन हाउ इट वर्क्स, वर्किंग कैसे होता है? तो पार्लियामेंट्री कमिटीज वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, और द राज्यसभा में चेयरमैन हो जाएगा. सो स्पीकर और RS चेयरमैन विल अलोकेट द बिजनेस. कौन से बिजनेस पे काम करना है कमिटीज को, ये स्पीकर और RS के चेयरमैन जो है वो बताएंगे. अलोकेट्स द बिजनेस टू द कमिटीज. राइट, सो ये डिस्क्रिशनरी पावर है. इट इज गिवन, दिस डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एलोकेशन ऑफ बिजनेस as given to the speaker and the RS chair. जैसे कि दो लोकसभा में आज स्पीकर बताएंगे कौन सी कमिटी पे किसको काम करना है, then राज्यसभा में the RS chair will decide which committee has to function on this. Okay, हमने देखा कि जैसे कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को एलोकेट करते हैं टू द डिफरेंट बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट बेंचेस है उसको भी कैसे फंक्शनल एलोकेट करते हैं, उसकी पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. उसी तरह से पार्लियामेंट की कमिटीज है कौन सी, विच पार्लियामेंट्री कमिटी विल वर्क ऑन विच फंक्शन और विच स्पेसिफिक सब्जेक्ट. दैट अलोकेशन ऑफ बिजनेस इज डन बाय द स्पीकर, और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो बताते हैं. राइट, समझ में आ रहा है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, वर्किंग हो गया, वो स्पेसिफिकली वर्क करते रहिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे. राइट, ओके. तो अगेन कमिटी का क्या है? कमिटी, इफ कमिटी डिसाइड्स द फंक्शन देन इट विल प्रोड्यूस द रिपोर्ट. ओके, सो दिस रिपोर्ट
it's either given to the chairman of that particular house or either presented to the parliament. Okay, जो कमिटी का जो रिपोर्ट है that will either be given to the parliament or either it is given to the chairman. Okay, जो parliamentary committee जैसे कि financial related committees होती है तो that will be decided, that report is presented to the parliament, or either जो rules committees होती है और business deciding committees होती है, administrative related committees होती है, that report will goes to the chairman of that particular house. So this is most important, कहाँ पे parliamentary committees report करती है. Okay, then we'll move to the next topic. So उसको पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन को इफिशिएंट बनाने के लिए उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, आइदर डॉक्यूमेंटेशंस और एविडेंस और पब्लिक ओपिनियन बताने के लिए that parliamentary committees has been provided with the secretariat, that राज्यसभा और लोकसभा के जो secretariats होते हैं, secretariat होती है, that will help the parliamentary committees in their function. Okay, so as we have all seen how the parliamentary, what features of parliamentary committees, कैसे appoint की जाती है parliamentary committees, then how parliamentary committees works, किस किस के अंडर वर्क होती है. तो अथॉरिटिवली जो अगर हम देखें तो स्पीकर से या चेयर, राज्यसभा के चेयरमैन है, वो रेगुलेट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज का बिजनेस, राइट, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कमिटी. ओके, देन रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है? एज वी हैव सीन, रिपोर्ट विल गो टू आइदर टू द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस और टू द पार्लियामेंट, राइट. ये इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है. तो विथ increase the efficiency of parliamentary committees or either to provide the documentation or particular evidence or to generate the public opinion एक बिल के पास कैसे आ रहा है, तो उसको parliamentary committees को बताने के लिए that requires the secretary. Okay, so that secretary is provided by the लोकसभा के जो secretariat होती है वो provide करते हैं, then राज्यसभा के जो secretariat होती है वो provide करते हैं. समझ में आ रहा है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी. एज वी ऑल नो, पार्लियामेंट्री कमिटीज आर देयर. पार्लियामेंट्री कमिटीज आर देयर functioning to assist the functioning of parliament, right? So there are three types of parliamentary committees. First, parliamentary committees are ad hoc committees, and second, parliamentary committees, as we have seen here, the standing committees. And again, the third is the administrative committees. Okay, so उसको थोड़ा सा we'll discuss the types of parliamentary committees here, right? So ad hoc parliamentary committees are there, which is temporary in nature. Means they are appointed for a specific purpose, right? It is an ad hoc committee. So either they are appointed for a specific purpose, जैसे कि bills को evaluate करना है, और either कोई कमिटी हो जैसे कि इंक्वायरी करनी है किसी चीज की, either we have to inquire on the particular topics, तो ad hoc committees appoint की जाती है. एग्जाम्पल इसका देखें तो if we all know the Boffer scam, right? Boffer scam, तो उसके लिए उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी. जॉइंट मतलब दैट मेंबर्स केम फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा.
ओके तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी बोफर स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो दैट केम अंडर द एड हॉक कमेटी। मींस इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन, बोफर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन डन हो गया तो बोफर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन डन हो गया तो उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी, राइट। तो दैट पार्लियामेंट्री कमिटी विल सीज टू ऑपरेट, so that are temporary in nature. Ad hoc committees, so this is the most important function of this is the most important feature of parliamentary committees, which are ad hoc in nature. Then standing committees are continuous in nature. They perform the number of functions. उनके functions if we compare with the ad hoc committees, they are continuous, वो temporary नहीं होती, continuous होती है. Then function of standing committees are varied function, जैसे कि कोई फाइनेंशियल बिल हो या डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज हो, वो कंटिन्यूअस कमिटी होती है, राइट, दैट एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली. So this is most important difference between standing committees and ad hoc committees. And the third type of committees are administrative committees. Means particular जो लोक सभा हो और either राज्य सभा that has a specific functions to do. Okay, जैसे कि लोक सभा की कमिटी है रूल्स बनाने की, तो रूल्स कमिटी ऑफ लोक सभा एंड रूल्स कमिटी ऑफ राज्य सभा, that is a difference. तो वो जो कमिटी है दैट विल हेल्प यू द असिस्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकसभा और राज्यसभा, उसको फंक्शनिंग के लिए असिस्ट करती है, रूल बनाने के लिए, देन बिजनेस अलोकेशन, तो उनको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, दैट विल हेल्प द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर असेंबली, जैसे कि लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, तो उन कमिटीज को एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी कहा जाता है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन द डिफरेंट कमिटीज. ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, राइट. ओके, एज वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज गेट डिवाइडेड बिटवीन द स्टैंडिंग कमिटीज, एड हॉक कमिटीज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज. So administrative committees are not that important as the standing committees and ad hoc committees. Okay, so administrative committees are there to help the functioning of particular house, functioning of RS or Lok Sabha or Rajya Sabha. So administrative committees are most important within the functioning. But if you compare the functioning of standing committees and ad hoc committees, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो स्टैंडिंग कमिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज, राइट. एज वी सीन द एड हॉक कमिटीज आर जस्ट टेम्पररी कमिटीज, बट स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट कमिटीज, परमानेंट नेचर होता है उनका, राइट. सो what are the different standing committees इन द पार्लियामेंट? तो फंक्शंस जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमिटी, फाइनेंशियल रिलेटेड जो मैटर्स है गवर्नमेंट का, तो उसको फाइनेंशियल दैट एनफोर्सेस द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू एनफोर्स द पार्लियामेंट ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, राइट. पब्लिक पर्स जो है, पब्लिक पर्स को गाइड करना, पब्लिक पर्स को प्रोटेक्ट करना, उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी करप्शन और एम्बेजलमेंट ऑफ मनी, embezzlement of money. So to enforce the financial accountability on the executive, there are three different committees are there. First is the public account committee, then second is the estimate committee, and third is the committees वो जो public sector undertaking जो है
उनके लिए एक स्पेसिफिक कमिटीज बनाई गई है. सो दो दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट कमिटीज विच एनफोर्सेस द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑन द एग्जीक्यूटिव. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करने के लिए ये 3 कमिटीज हैं. देन अगेन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. These are the next important committees. So these committees also enforce the financial accountability, but it based on the department, right? So these committees enforce the overall financial accountability. Okay, and department related standing committees will enforce the financial accountability based on the particular department. जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, देन होम डिपार्टमेंट है, ओके, देन ट्रेड रिलेटेड कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, तो दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज की जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, दैट departmental related standing committees है, that will enforce the financial accountability of particular department or particular ministry. So this is most important difference. So this is most important difference between department related financial accountability और द फाइनेंशियल जो स्पेसिफिक कमिटीज है वो ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती है, राइट. डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मेंटेन करती है. अगेन देयर इज अगेन द नेक्स्ट फंक्शन इज दैट डिपार्टमेंट रिलेटेड जो बिल्स वगैरह होते हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करती है डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज, एंड अगेन द स्पेसिफिक बिल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो भी देखती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी. ओके, तो स्टैंडिंग कमिटी. नेक्स्ट केम द इंक्वायरी रिलेटेड जो स्पेसिफिक कमिटीज है विद इन द पार्लियामेंट, जैसे कि कमिटी ऑन पिटिशंस. जो पार्लियामेंट के पास जो पिटिशंस आते हैं दैट केम्स अंडर द पर्टिकुलर इंक्वायरी रिलेटेड कमिटीज. देन Parliamentary Committee on Ethics. We will discuss it in the details in the next chapter, next slides. Then again the Parliamentary Committees on the Privileges. So these committees has given some type of censure power. अगर कोई भी either member of parliament violate the particular privileges or violate the code of ethics, so inquiry committees, what inquiry committees did, they will provide the report to the parliament on that particular member. Okay, so these inquiry related जो standing committees है, that has also important functions to provide the decorum as well as the integrity of our parliamentary system. So this is also most important function of parliamentary committees. And the fourth important type of standing committees are the scrutinize, to scrutinize and control. Some parliamentary committees are there to scrutinize the parliamentary functions as well as the executive. Executives है उनकी जो एक्टिविटी है उनको स्क्रूटिनाइज करने के लिए, जैसे कि कमिटी ऑन एश्योरेंस, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस. सो what this committee will do is that whether government ने कोई जो assurance दिए है, government has given some assurance to the people, whether these assurances are followed or not, whether these assurances are completed by the government. जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई एश्योर किया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या कोई ड्रॉट रिलेटेड मेजर्स हो, उस एश्योरेंस को गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया है या नहीं, उसको दिखाने के लिए दिस कमिटी इज also there, that is the committee on government assurance. So these committees came under the scrutinize, to scrutinize the executive. Okay, और जैसे कि कमिटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट, पार्लियामेंट की जो विमेन एम्पावरमेंट की जो कमिटी है,
So either government has given some assurance regarding the empowerment of women, right? Okay, so they have made some law, or they have provided for a particular fund. So these funds are either efficiently working or not, or these laws are efficiently working or not. These committee scrutinize that particular assurance given by the government. So these committees are also important in the parliamentary फंक्शनिंग. ओके राइट, पार्लियामेंट्री का जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे, उसको इंपॉर्टेंटली फंक्शन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए दीज टाइप ऑफ कमिटीज आर प्रोवाइडेड. राइट, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, देन एज वी हैव सीन द एड हॉक कमिटीज, राइट. एड हॉक कमिटीज आर टेम्पररी इन नेचर. टेम्पररी है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बनाई जाती है. दीज आर फॉर प्रोवाइडेड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि जो मार्केट स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, सो एट दैट टाइम ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द पर्टिकुलर स्कैम. So either after the completion of report that particular market related scam, that ad hoc committees are ceased to operate. Okay, उनकी ऑपरेशन खत्म हो जाती है, उनका फंक्शन खत्म हो जाता है. तो दीज आर कॉल्ड एज अ पार्लियामेंट्री टेम्पररी कमिटीज, राइट. सो पार्लियामेंट्री एड हॉक कमिटीज में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमिटीज. ओके, द फर्स्ट आर इंक्वायरी कमिटी, एज वी हैव सीन. जैसे कि मार्केट स्कैम में और बोफर स्कैम में पर्टिकुलर फंक्शनिंग. सो दीज आर कमिटीज आर देयर टू इंक्वायर अबाउट द पर्टिकुलर मैटर. जैसे कि बोफर स्कैम में और मार्केट स्कैम रिलेटेड जो इंक्वायरीज थी, उनको बनाने के लिए ये एड हॉक कमिटीज बनाई गई थी. एंड द नेक्स्ट इज द एडवाइजरी कमिटीज. एड हॉक कमिटीज कुछ जो होती है वो एडवाइजरी फंक्शनिंग करती है. एडवाइजरी उनका नेचर होता है. आइदर द कमिटीज विच स्क्रूटिनाइज द बिल. जैसे कि बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, कोई भी बिल होगा तो उसको वो स्टडी करेगा. दिस कमिटी विल स्टडी दैट पर्टिकुलर बिल एंड देन गिवन द एडवाइस टू द पार्लियामेंट. ओके, सो एड हॉक कमिटीज आर टू टाइप्स ऑफ कमिटीज. फर्स्टली द इंक्वायरी कमिटी एंड द सेकंड इज द एडवाइजरी कमिटी. ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द लाइव चैट. सो this is the classification, as we have all seen how the parliamentary committees has started, how the parliamentary committees functions, and what are the different type of parliamentary committees. Parliamentary committees क्या है, parliamentary committees कैसे बनाई जाती है, parliamentary committees के कैसे functions होते हैं, ये हमने देखा. Then we have seen the parliamentary committees के classification को हमने देखा अभी. Okay, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. Then we'll move to the next slide. Discuss the financial committee. As we have all know, the finance sorry okay, the first, financial accountability. As we have seen, financial accountability, maintaining the financial accountability of the executive is the topmost function of parliament, right? So this is most important function, that is the maintenance of financial accountability. Okay, financial accountability को enforce करना एग्जीक्यूटिव पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी enforce through the committee system and with the help of institutions. So committee system is provided within the parliament.
And institutions are provided by the constitutions. As we all know, the main institutions for the financial accountability is the Controller and Auditor General of India. CAG. So this is financial accountability is provided by either by the institutions, that is CAG, independent institutions, and either provided within the parliamentary committee system provided by within the parliament. Okay, तो financial accountability को enforce करने के लिए we have financial committees. So this is the specific functioning committees. उनका specific function क्या है? That will evaluate the financial accountability, enforce the financial accountability. Enforce the financial accountability on the executive, right? So they will not discuss, they will not functions on different nature. जैसे कि bills को evaluate नहीं करेंगे वो, that only functions based on the finance related matter. Finance वो evaluate करेगी. So these came under the financial committees, right? The most important financial committee is the public account committee. This is most important financial committee. So we will discuss the important जैसे कि criterias है when how the public account committee has been evolved, तो उसको थोड़ा सा हम discuss करते हैं. This is most important with respect to prelims also or mains also, right? Mains और prelims में बहुत important topic है, जैसे that is the public account committee. तो public account committee, as we all know, is provided, historically provided in the 1999 Act. 1990 Act का जो Montagu Chelmsford का जो Act था, which provided the public account committee. Okay, so it is established in the 1921. 1921 में उसका establishment हुआ था at the Central Council. Okay, so ये important है. So this committee has been included within the constitution. Within constitution उसको inclusion किया गया है. And sorry, okay, this is not working. Okay, one sign. Okay, yes. So public account committee has been provided within the constitution. Constitution में provide की गई है. It is made up of 22 members. 22 members. So it is a joint committee. The 15 members will came from the Lok Sabha and 7 members came from the Rajya Sabha. So this is a joint committee of Lok Sabha and Rajya Sabha. So this is most important, right? So no minister is provided, is given the place within the committee. Committee में कोई members नहीं, कोई minister जो होगा उसको representation नहीं दिया गया है. Again, if we consider up to 1950 to 1967, Speaker appointed the chairman of Public Account Committee from the majority party, right? The party which is ruling will be the member, will be the chairman of Public Account Committee. उस पार्टी से ही Public Account Committee के chairmans का चुनाव होता था लगे again. But after 1967 there is a convention has developed under which the chairman of Public Account Committee will be from the opposition. This is most important innovation in our Indian parliamentary committee system, that the Public Account Committee will be chaired by the member from the opposition party. So this is most, either we have seen that the PAC के जो chairman है वो opposition leaders होते हैं. So this convention is not original
जैसे कि ओरिजिनल कन्वेंशन नहीं है ये, इन आज वी सी द 1950s टू 1967 तक जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो पार्टी रूल कर रही है, उसके ही मेंबर चेयरमैन रहते थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के। लेकिन 1969 से एक कन्वेंशन डेवलप हुआ, उसके हिसाब से द अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी मेंबर विल बी द हेड ऑफ दैट पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक नेचर है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ओके, द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द इलेक्टेड कमेटी। द एवरी ईयर, मतलब एक साल के लिए उसका इलेक्शन होता है, हर एक साल के बाद नया इलेक्शंस होता है। सो द कमिटी मेंबर्स विल बी इलेक्टेड अमंग द पर्टिकुलर हाउसेस इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैनर। जो जिस पार्टी को उतना प्रोपोर्शन मेंबर्स है, उसके हिसाब से कमिटी में जगह मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, गिविंग द अपोजिशन role maintaining the financial accountability of the government. So this is most important committee. जैसे कि कोई अपोजिशन होगा, वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगा, तो दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि जैसे कि जो 2G स्कैम हुआ था और जैसे कि बफर स्कैम हुआ था, तो वो स्कैम नहीं होते अगर पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो इफिशिएंटली वर्क करती, तो ऑब्वियसली दैट स्कैम्स वुड नॉट हैव बीन टेकन प्लेस। बट आफ्टर 1967 में पब्लिक अकाउंट कमिटी के जो फंक्शंस है उसको चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए। ओके, जो कांग्रेस सिस्टम थी उसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, अपोजिशन पावर में आनी, अपोजिशन वॉइस हैज गेटिंग द मेजर सपोर्ट। ओके, तो उसके हिसाब से ये कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी भी इवेल्युएट हो रही है। either either the question has been asked whether the constructive role of opposition in the Indian parliamentary system, so we can say that the opposition can play a very constructive role in the parliamentary committee system, through parliamentary committee system। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करना हो तो पब्लिक अकाउंट कमिटी इज वाइड ओपन फॉर द कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ अपोजिशंस, राइट। तो मेजर फंक्शंस अगर हम देखें पार्लियामेंट्री कमिटी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी? द फर्स्ट फंक्शन इज दैट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, दैट गिव्स द रिपोर्ट ऑन द appropriation account, then financial account, and third is the report on the PSUs. So these reports are prepared by the controller and auditor general. So these reports will be analyzed by the parliamentary committee, public account committee. Public account committee will analyze the report given by the controller and auditor general. Okay, so appropriation means the money which is taken by the government from the consolidated fund of India, either which is expenditure उसके हिसाब से है या नहीं, मतलब जो मनी लिया हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके हिसाब से ही उसके स्पेंडिंग हुई है कि नहीं, दैट विल केम अंडर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइक द फाइनेंशियल अकाउंट विल केम द रेवेन्यू generated and expenditure, okay, and the PSU related reports. So these reports are evaluated by the public account committee, and these reports will be given to the parliament. So this is most important function of public account committee. Public account committee करती क्या है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल है वो जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को इवेल्युएट करती है, जो एक्सेस ऑफ अमाउंट जो गवर्नमेंट ने यूज किया है, एक्सेस ऑफ अमाउंट, उसको भी इवेल्युएट करती है और उसका जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को देती है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट। यहाँ पे हम फंक्शन देख रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो रिपोर्ट है
जो कैग के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसको एनालिसिस करना। अगेन यहाँ पे अगर हम कैग पब्लिक अकाउंट कमिटी के जो लिमिटेशंस को देखें, इफ यू सी द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, देन फर्स्ट इज दैट it doesn't provide the policy matter है, public account committee will never interfere in the policy related matter, right? It only evaluate the report related to that particular policy. कैग के जो रिपोर्ट है, जैसे कि नरेगा पे रिपोर्ट बनाया कैग ने, और 2G पे जो कोल हुआ था, कोल एस्टिमेशन हुआ था, कोल पे जो रिपोर्ट बनाया था, दैट ऑब्वियसली वी हैव गॉन थ्रू द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके, अगर पब्लिक अकाउंट कमिटी इफिशिएंट रही थी तो कोल स्कैम जैसे जो स्कैम्स है, सो दैट वुड हैव बीन नॉट टेकन प्लेस, राइट? ओके, सो वो जो अगर पब्लिक अकाउंट कमिटी के पास रिपोर्ट गया कोल का, तो वो कोल के जो स्कैम कोई पॉलिसी है उस पर कोई एडवाइजरी नहीं देगी। जो स्कैम हुआ है उसमें जो मनी लिया गया है उसका ही वो एक्सपेंडिचर रूल्स के हिसाब से हुआ है कि नहीं, सिर्फ ये देखेगी पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक अकाउंट कमिटी का, दैट विल नॉट गिव इन द पॉलिसी मेकिंग पे कोई वो एडवाइजरी नहीं देगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन द कमिटीज रोल केम इन द पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो ये रोल आता है, मतलब एक्सपेंडिचर होने के बाद ही उसको इवेल्युएट किया जाता है, राइट? द कमिटीज पब्लिक अकाउंट कमिटीज रोल केम इन द पोस्ट फैक्टो, मतलब एक चीज हो गई, जैसे कि घोटाला हो गया 2G स्कैम का या कोल का, तो उसके बाद ही पब्लिक अकाउंट कमिटी का रोल आता है। तो उससे पहले वाला जो रोल है वो फंक्शन पब्लिक अकाउंट कमिटी के पास नहीं है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट? अगेन the third most important power of disallowance, मतलब ये जो मनी है एक्सपेंडिचर किया है एग्जीक्यूटिव में, उसको डिसअलाउ, उसको खारिज नहीं कर सकता पब्लिक अकाउंट कमिटी। इलीगल भी होगा तो उसको डिसअलाउ नहीं कर सकता। दैट committee cannot say that it is illegal. So this is most important deficiency in the functioning of public account committee. Public account committee का बहुत important role है parliamentary committee system में। So public account committee में questions पूछे जा सकते हैं, what are the important power of public account committee and what is the deficiency in the working of public account committee. तो ये दो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, राइट? ओके, देन वी विल मूव टू द एस्टिमेट कमिटी। वी विल डिस्कस द एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट कमिटी को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज द एस्टिमेट? एस्टिमेट इज द जनरल एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, एक एस्टिमेट बनाता है। जैसे कि कोई फंक्शन होगा तो हम, जैसे कि कोई फंक्शन है हमारे यहाँ पे, तो हम जनरल एस्टिमेट बनाते हैं ना, तो उसी को एस्टिमेट कहा जाता है। तो दिस पार्लियामेंट्री कमिटी आल्सो हैव द एस्टिमेट कमिटी टू एनफोर्स द फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉपर्टी, financial propriety on the executive, right? So as we see, estimate committee has established in the 1921 only, 1921 में ही establishment हुआ था estimate committee का। Then again after the constitution in 1950, new estimate committee has been formed। 1950 में जॉन मथाई has recommended to form the new estimate committee. So this committee has been formed in the 1956 तक। In 1956 it has only 25 members,
but now it has a 30 members. After 1956 it has only 25 member, but after 1956 के बाद यहाँ पे 30 members हो गए, right? So these committees, what is the special feature of this committee is that it is the only Lok Sabha members committee, means Rajya Sabha doesn't have any representation in the estimate committee. So this is most important function. If you see the function, if you see the features, if you see the compare with the public account committee, estimate committee has a only Lok Sabha dominated committee, right? So this is most important. Rajya Sabha doesn't have any representation within the estimate committee. So estimate committee again is the elected committee, elected for 1 year. एक साल के लिए उसका इलेक्शन होता है, एक साल के बाद न्यू एस्टिमेट कमिटी हैज प्रोवाइडेड, देन अगेन द इलेक्शन इज डन ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, मतलब जिस द पार्टी विच हैज अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विल गेट द रिप्रेजेंटेशन, जिस पार्टी के साथ जितने मेंबर्स होंगे उनके हिसाब से ही उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, राइट, इन द एस्टिमेट कमिटी. So estimate committee's chairman is appointed by the speaker. Speaker appoint करते हैं उसको. यहाँ पे भी as we see the no minister has represented within the estimate committee. Estimate committee में भी कोई minister है उनको representation नहीं मिलेगा. So ये हो गया estimate committee का structure. What are the function of estimate committee? Function तो obviously ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करना एग्जीक्यूटिव पे, राइट, बट वो कैसे करती है? उनके पास कैग जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं. एस्टिमेट कमेटी के पास कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है. इफ यू सी द एस्टिमेट कमेटी वर्क्स इन अ कंटिन्यूअस बेसिस, मतलब ईयरली वर्क करती है, कौन सा भी महीना हो वहां पे भी वर्क करती है. अगेन यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमिटी विल वर्क आफ्टर द रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिपोर्ट, जो कैग जो रिपोर्ट आते हैं उसको ही एनालाइज करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमिटी. सो उनके जो कंटिन्यूअस फंक्शनिंग है वो पब्लिक अकाउंट कमिटी में नहीं है. लेकिन इफ वी कंपेयर द एस्टिमेट कमिटी इज अ कंटिन्यूअस कमिटी विच वर्क्स ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस. जैसे कि कुछ एस्टिमेट्स है गवर्नमेंट्स के, जैसे कि रेवेन्यू कहाँ से आएंगे या एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा या कोई स्कीम होगी, जैसे कि MPLR जो स्कीम है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ओनली द MPLR स्कीम, हाउ द expenditure will takes place, so that estimates will be evaluated by the estimate committee. So this is most important function of estimate committee, right? So estimate committee, due to its function, can provide the alternate policy. The government policy can be criticized by the estimate committee. So this is most important function of estimate committee, right? जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको अल्टरनेट, द एस्टिमेट कमिटी कैन प्रोवाइड द अल्टरनेट पॉलिसी टू द गवर्नमेंट पॉलिसी. So estimate committee can give advice to increase the efficiency, administrative efficiency also. So this is most important difference between the public account committee and the estimate committee. Public account committee will deal only in the monetary nature, जैसे कि पैसे कितने पैसे लिए हैं और कहाँ पे खर्च हुए हैं और उतने ही पैसे खर्च हुए हैं या नहीं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है. पब्लिक अकाउंट कमेटी कोई पॉलिसी एडवाइजरी नहीं देती गवर्नमेंट को, बट एस्टिमेट कमेटी विल गिव द पॉलिसी एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट. अगेन इट विल आल्सो एडवाइज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इफिशियंसी टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर स्कीम और पर्टिकुलर पॉलिसी. So this is most important function of estimate committee. Estimate committee is considered as a continuous committee, means साल भर वो काम करेगी, कौन से एस्टिमेट्स है जो गवर्नमेंट के उस पर वर्क करेगी और उसको पॉलिसी एडवाइस देती रहेगी. पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, जब 2G जो ये कैग रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए ही पब्लिक अकाउंट कमेटी
फंक्शन करती है, राइट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टीमेट कमिटी। ये फाइनेंशियल रिलेटेड कमिटीज हम देख रहे हैं। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अगेन द थर्ड फाइनेंशियल रिलेटेड कमिटीज इज द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। Committees on public undertaking. Okay, so committees on public undertaking started in the 1964. 1964 में that started. Earlier it has only 15 members, which also came. This is also a joint committee like public account committee. 10 members from the Lok Sabha and 5 members from Rajya Sabha. Earlier it has only 15 members. Again in 1974 the number of members has been increased. The 15 members came from the Lok Sabha and 7 members came from the Rajya Sabha. This is also important. Okay, so this is also the elected committee, which is duration of this committee is 1 year and it is elected on the proportionate basis. But what is the difference is that the committee on public undertaking, the chairman of committee on public undertaking is only from the Lok Sabha. Sorry, the chairman जो होता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी का, इट ओनली केम्स फ्रॉम द लोक सभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स है इस कमिटी में वो चेयरमैन नहीं बन सकते। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, राइट। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी क्या करती है, वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग के विच इज प्रोवाइडेड बाय आइदर बाय द कैग और बाय द इंडिपेंडेंट, जैसे कि कैग के जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करती है और इंडिपेंडेंटली or either it will evaluate the public undertakings functioning independently and the provide report to the parliament. Parliament को report submit कर देगी. So this is most important 3 financial account committees. Financial related जो accountability है executive की, which is enforced by the parliament through these 3 committees. That is the public account committee. पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, जितना पैसा लिया उतना ही खर्च हुआ है कि नहीं वो देखेगी। देन एस्टीमेट कमेटी क्या है, एस्टीमेट कमेटी क्या करती है, वो जो एस्टीमेट्स है, ईयरली एस्टीमेट्स है रेवेन्यू के जो एक्सपेंडिचर के, उसको एनालाइज करेगी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी इज दैट द पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी विच विल इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द standing committees, department related standing committees. Okay, as we have seen the function of parliament, okay, यहाँ पे अगर फंक्शन हम देखें तो लॉ बनाना, parliament is there to make a law, then to maintain the accountability, right. So committees will help in making the laws, as we will see in the next chapter how committee system will help in the making the laws of parliament. Again the accountability, as we have seen how the committee system is helping the parliament in the enforcing the financial accountability through the 3 committees. Okay, so these departmental related standing committees has a combined function. Combined function, that is to enforce the financial accountability and to help in the making the law. So this function, this department related standing committees has a combined function, that is to enforce the financial accountability as well as the to help the parliament to pass the particular law, to pass the particular bill of law,
एज वी हैव सीन द एस्टीमेट कमिटी है, एज वी हैव सीन द पब्लिक अकाउंट कमिटी है, और जो PSU रिलेटेड कमिटी है दैट विल ओनली हेल्प द पार्लियामेंट in the maintaining financial accountability, but departmental related committees will help in the parliament for making law also and making the financial accountability also. तो वो कैसे करती है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना. सॉरी. So as we all know, article 118 which provides the power to the parliament to regulate or to make laws for its efficient conduction of its own business, right? आर्टिकल 118 में प्रोवाइड किया गया है. तो ऑन दैट पावर Parliament has established the departmental related standing committees in 1993. 1993 Parliament has provided for a departmental related standing committees. So these committees are not provided in the 1950s. It is provided in the, it is established in the 1993 under the power of rules and regulation की जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, उसके अंडर ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई है, राइट. सो इन 1993 देयर वर 17 कमिटीज. अगेन इन 2004 में अगेन वहां पे 7 कमिटीज को ऐड कर दिया. तो फर्स्टली देयर वर 17 कमिटीज. अगेन in 2004 new 7 committees has been added. So total around 24 departmental standing committees are there within the Indian Parliament. So this is most important feature of our standing committee system. So appointment, how this appointment has been done in the departmental standing committees. So firstly these are nominated committees. So as we have seen in the estimate committee and public account committee, those committees were election होता है उनके कमिटी मेंबरशिप के लिए, but departmental related committees है वो nominated होती है, right. जो speaker है either speaker or the राज्य सभा chairman nominate करते हैं यहाँ पे. Okay, so there are 31 members will be there in the standing committee. So 21 members will be from Lok Sabha, which is provided by the speaker, which will be nominated by the speakers, and 10 members will came from the Rajya Sabha, which will be nominated by the chairman of Rajya Sabha, right. So the duration of these committees are 1 year. 1 year के लिए appointment होती है. In the next year new members will be appointed in the departmental standing committees. Function of particular department, जैसे कि financial department, home ministry ले लो, home ministry है वह उसकी जो departmental related standing committees है that will help to assist और इवेल्युएट द पर्टिकुलर बिल. जो पर्टिकुलर होम मिनिस्ट्री का कुछ बिल हो गया, होम मिनिस्ट्री इफ होम मिनिस्ट्री प्रोवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर बिल और होम मिनिस्ट्री स्पॉन्सर्ड दैट पर्टिकुलर बिल विच इज गिवन टू द पार्लियामेंट, अगेन व्हाट पार्लियामेंट विल डू, पार्लियामेंट विल गिव दैट पर्टिकुलर बिल टू स्टडी टू द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी. डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी क्या करेगी, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी विल एनालाइज दैट बिल. इट विल आल्सो it will move the amendment to that particular bill. Amendment भी कर सकते हैं that particular bill, and these report will be given to the parliament before the second reading. Second reading जो होती है बिल की, उससे पहले ये बिल जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देती है. तो ऑब्वियसली जो
सेकंड थर्ड रीडिंग में जो वोटिंग होता है या सेकंड रीडिंग में जो अमेंडमेंट पास होती है दैट पर्टिकुलर बिल्स में, so that report of particular standing committee will help the member of parliament to discuss more educatively on that particular bill. जब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के बिल्स को रिपोर्ट को रेफर करेगी पार्लियामेंट, तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी दैट बिल को लेके, राइट. सो दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द डिबेट ऑफ पार्लियामेंट फॉर दैट पर्टिकुलर बिल. समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एक रिपोर्ट देती है ऑन दैट पर्टिकुलर बिल पे, तो उसके हिसाब से पार्लियामेंट पे डिबेट हो जाता है. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट एज वी ऑल नो एवरी मिनिस्ट्री will provide the annual report to the parliament of their functioning. एनुअल रिपोर्ट होता है हर एक मिनिस्ट्री का, तो दैट रिपोर्ट विल बी इवेल्युएटेड बाय द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके, तो यहां पे हो गया कि कैसे लॉ बनाने में हेल्प करती है. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. हाउ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज विल हेल्प टू एनफोर्स द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. तो departmental related standing committees will analyze the demands of grants of that department, of that ministry. हर एक मिनिस्ट्री एज वी ऑल नो सॉरी बजट में डिफरेंट डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है, जैसे कि 17 ग्रांट्स केम फ्रॉम द रेलवे मिनिस्ट्री, अगेन 11 ग्रांट्स केम फ्रॉम द 7 ग्रांट्स केम फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स. ओके, तो उस पर्टिकुलर ग्रांट्स को एनालाइज करना, मतलब कितना मनी चाहिए, कितने पैसे चाहिए हर एक डिपार्टमेंट को, उसके लिए वो डिमांड करता है हर एक बजट में. ओके, तो उस डिमांड्स ऑफ ग्रांट पे वोटिंग होता है पार्लियामेंट पे, तो उसको एनालाइज करके रिपोर्ट देना. सो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी विल एनालाइज द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ ग्रांट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड विल प्रोवाइड द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज कैसे हेल्प करता है कि जो हर एक मिनिस्ट्री के जो डिमांड्स होती है पैसे के लिए बजट में, उसको इंक्लूड किया जाता है, राइट. तो उस डिमांड्स को दैट विल बी एनालाइज्ड बाय द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एंड विल दैट रिपोर्ट इज गिवन टू द पार्लियामेंट. सो लास्ट ईयर से अगर कोई डिमांड ऑफ ग्रांट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी विल फाइल द रिपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ ग्रांट. तो एक्सेस ऑफ ग्रांट को रिपोर्ट को कैसे हुई, क्यों चाहिए, तो ये सवाल पार्लियामेंट पे पूछने के लिए ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फंक्शन, दैट इज द लॉ मेकिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, राइट. समझ में आ रहा है? तो इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. देन अगेन द अथॉरिटी, एज वी ऑल नो द अथॉरिटी लाइज विद द स्पीकर और RS. as departmental standing committees is divided between the लोक सभा एंड राज्यसभा. ओके, उसके जो अथॉरिटी है वो लोकसभा एंड राज्यसभा के फंक्शन में आती है. जैसे कि पर्टिकुलरली जो कॉमर्स जो होम अफेयर्स है, होम अफेयर्स रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ राज्यसभा. अगेन द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कमिटी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट की कमिटी है विच इज ऑल्सो केम इन द अथॉरिटी ऑफ राज्यसभा. अगेन द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की जो कमिटी है विच इज ऑल्सो केम अंडर द राज्यसभा. राज्यसभा के पास 24 में से 8 की जो अथॉरिटी है विच इज केम अंडर द राज्यसभा, वाइल द रिमेनिंग 16
की अथॉरिटी है लोकसभा के पास जाएगी, जैसे कि डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, देन अगेन एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है, देन अगेन फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, these committees authorities given to the which came under the Lok Sabha. So our departmental related standing committee जो है वो राज्यसभा के अंदर आती है और लोकसभा के अंदर रिमेनिंग जो 16 है उसकी अथॉरिटी है वो लोकसभा के अंदर आती है. ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. राइट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. अपॉइंटमेंट कैसी होती है, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी, then how this authority related to departmental standing committee is divided between the Lok Sabha and Rajya Sabha, and the main, that is the function of departmental related standing committees. कैसे ये departmental related standing committees पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए हेल्प करती है, और the departmental related financial committees are helping parliament to enforce the financial accountability. Right, okay, कोई डाउट होगा तो you can ask me. Then there are most important other committees are there. There are other committees. ऐसे तो हमने देखा कि जैसे कि important committees कौन सी है जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर में हेल्प करती है, either they help in the finance related matter or either they help in the making of bill, legislative functions में जो help करती है वो are important committees, right? So there are other important committees. The first committee which is important is that the ethics committee, जो inquiry, it helps in the inquiry related function of parliament. तो ethics committee started in 1997 by the Rajya Sabha. Rajya Sabha has a separate ethics committee and Lok Sabha has a separate ethics committee. Okay, Lok Sabha has started its ethics committee in 2000. Rajya Sabha has started earlier in 1997 and Lok Sabha has started in 2000. So ethics committee in Rajya Sabha and Lok Sabha, what is the main function of that ethics committee is to enforce the code of ethics on its members. Whether these members are behaving in a proper manner, they are not harming the privileges, given to the parliamentary, or to inquire the violation of cases. Ethics का अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हुआ हो, these committees will inquire into the behavior of that particular member of parliament. Okay, so this is most important committee. Either you can use this ethics committee in the question of जैसे कि parliamentary ethics के कैसे चाहिए, तो that will help you to write this particular question, right? Ethics committee को you can use the ethics committee in more appropriate manner. So this is inquiry committee or either the censure committee also. Censure भी करता है member of parliament को. If this behavior is not the proper, if it's violates, whether it member is violates the code of conduct given under that particular members, given to the particular members by the parliament, so ये most important function हो जाता है to enforce the ethics, to enforce the code of conduct on the member of parliament. Again, the next most important committee is the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes population. So what this committee is made up of 30 members. Again, the joint committee, this is a joint committee. The 20 members came from the Lok Sabha and the Lok Sabha से आते हैं, and 10 members came from the Rajya Sabha. Okay, this is a important committee which is established in the 1997. Okay, so most important function of this committee is to
analyze the report of National Commission of Scheduled Caste or National Commission of Scheduled Tribes. National Commission of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, which provides the separate report after 2003 bifurcation होता था, bifurcation हो गया उनका, so that provides the separate report to the Parliament. So उस रिपोर्ट को एनालाइज करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ SC and ST, कमिटी ऑन SC and ST, राइट. The again most important function of this committee is that whether this constitutional implementation of programs related to SC and ST, जो कुछ प्रोटेक्शंस के लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट है, एज अ एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट द एट्रोसिटी एक्ट, whether this atrocity act is implemented efficiently or not. ये कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC and ST देखेगी, आइदर वो इफिशिएंटली वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, और these report should be given to the Parliament. So obviously Parliament will debate on that particular law and will decide whether to amend it to make it more efficient or not. Okay, so this is most important function of Committee on Welfare of SC and ST, right. जो कुछ schemes है constitutionally mandated, जो welfare schemes है SC and ST के लिए, तो committee will inquire into that implementation of particular schemes and will provide the report on that efficient working of that particular scheme to the Parliament. So that will help to decide whether to amend that particular scheme or whether to continue that particular scheme or whether to amend that particular law. जैसे कि हमने एज ए एग्जाम्पल एट्रोसिटी एक्ट लिया था, तो उसका इफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, तो वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट कि उसे अमेंड करना है कि नहीं. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट. अगेन द इंपॉर्टेंट कमिटी इज द कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, विच इज ऑल्सो फाउंडेड इन द 1997 में उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था. दिस इज ऑल्सो द जॉइंट कमिटी मेड अप ऑफ 30 members. 20 members will came from the Lok Sabha, 10 members will came from the Rajya Sabha. So main function of this particular committee is to analyze the report, yearly report of National Commission of Women's. National Commission of जो Women's है, वो जो annual report submit करती है Parliament को. So this committee will analyze that particular report. Again, the second most important function is to evaluate the implementation of women's related schemes. women's related जो constitutional welfare schemes हैं, उसको analyze करती है this committee. It will give report to the Parliament. So Parliament decide करेगी whether you should continue with that particular scheme or not. So this is most important thing regarding the Committee on Empowerment. Then again, the next most important is the Joint Committee on Office of Profit. Office of Profit is the most important and very controversial subject. Controversial, why? Because in the Article 103, they are given that no member will be appointed as a minister of, और काउंसिल ऑफ मेंबर्स में अपॉइंट नहीं किया जा सकता वेदर इट होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? इट इज नथिंग बट अ पोस्ट, आइदर वेदर इट इज अ सेंटर रिलेटेड पोस्ट और स्टेट रिलेटेड पोस्ट विच हैज अ फाइनेंशियल बेनिफिट. कोई भी स्टेट की एक पोस्ट हो, स्टेट की पोस्ट या सेंटर की पोस्ट हो, वहां पे आपको अगर फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल 103 में लिखा गया है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट विच ऑफिसेस
which offices came under the office of profit, it decided by the joint committee of office of profit. ये भी 15 member committee है. From this 10 came from the Lok Sabha and 5 came from the Rajya Sabha. So ये जो controversy होती है whether this office of profit or not, so these decided by the joint committee on office of profit, right? तो ये important functions है. This is the most important functions of parliament. Law बनाने के बाद, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि टू मेंटेन द इथिकल बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस इज डन बाय द इथिक्स कमिटी. एंड अगेन टू वर्क ऑन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल जो वेलफेयर स्कीम्स है विमेंस के और SC/ST के रिलेटेड वो इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं. सो दैट फंक्शन इज ऑल्सो डन बाय द पार्लियामेंट्री कमिटी. Again, the parliamentary committee will also decide on the whether which office is office of profit or not. Okay. So as we have seen how the parliamentary committees functions, okay. So exam के orientation में अगर हम देखें, there are some things which has to remember. Prelims के लिए और मेंस के लिए भी there are certain things which should be remembered from the chapter of parliamentary committees. The first most important we have to remember is that there are some committees which are only made under the Lok Sabha. लोक सभा के मेंबर्स ही उस कमिटी में सिलेक्ट हो सकते हैं. These are totally exclusive for the Lok Sabha, right? So what are these committees? As we all seen, the estimate committee, finance की जो estimate committee है, estimate committees, the 30 members are only came from the Lok Sabha. So there are another committees, that the committee on private member bill. This is also the inquiry committee which is only given for the Lok Sabha. Lok Sabha में जो private members means the bills which came from the, which doesn't have the government जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके अलावा जो बिल्स आते हैं उनको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है. तो उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है which is only exclusive for the Lok Sabha. Again, the committee on absence of member, this is also given for the Lok Sabha. So Lok Sabha, there is a provision that if the member is continuously absent in the parliamentary proceedings for continuous 60 days, then he exclusive है Lok Sabha की committee. So question can be asked based on these topics, right? Okay. The next most important we have to remember is that which committee is headed by the speaker और जो chairman है जैसे कि राज्य सभा के, these committees are only, whether chairman or speaker will only lead these, will chair these committees. Firstly, the business advisory committee which is separate for the LS and RS. लोक सभा और राज्य सभा के लिए सेपरेट होती है. दैट विल हेल्प इन द एलोकेशन ऑफ टाइम एलोकेशन है पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लोक सभा और राज्य सभा में, उसमें हेल्प करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज हेडेड बाय द स्पीकर इन लोक सभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन इन द राज्य सभा. So those most important thing. Again, the rules committee is again separate committee for Rajya Sabha and separate committee for Lok Sabha. It is also headed by the speaker or the chairman of Rajya Sabha. Again, the general purpose committee in Lok Sabha is also headed by the speaker, and general purpose committee in Rajya Sabha is also headed by the RS chairman.
So this is most important if we are studying for the prelims के हिसाब से अगर देखें तो MCQs can be made on that particular topic, that which committees is only headed by the speaker or which committees came only on the Lok Sabha से ही exclusive committees कौन सी है, right? Okay, so as we have seen the parliamentary committees functions, structure, function and the importance, right? So we will conclude today's lecture on this note. Again, in the next lecture we will move to the next topic, that is the स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, इसको डिटेल्स में एनालाइज करते हैं. सो दैट विल हेल्प. सो हाउ we will proceed is that we will describe how the state government is different from the center. उसकी जो procedure है, how the state parliament is different from the central parliament, and how the state procedure to pass the law is different from the central assembly. Okay, so we will describe in a very detail in the next lecture. That will help you to write the answers in the prelims also and the mains also. Okay, we will conclude on that topic. If you want to join or if you want to subscribe for the Unacademy, please use my code, that is the referral code, that is the Aniket, that will give you the 10% of discount on your subscription. So thank you for joining. We will meet in the next lecture tomorrow.